we are doing. So every time we are practicing the NEET 2022 grand test paper, we will be doing the problems from your atoms. We will be doing the problems from your atoms part affiliation. We will be doing complete atoms. That means we will be doing complete modern physics. We will be doing complete heat, units and dimensions, gravitation, SHM. We will be doing your waves question, and we'll be doing your complete optics, wave optics, semiconductors and devices. We have not completed this one, so we'll do it later. Then we'll be doing complete modern physics is over here right now, units and dimensions and errors, isn't it? And gravitation, SHM, gravitation also will be doing. Sure. See the first question, beta. First question belongs from your units and dimensions. Let's see the first question. So question number 1 we can do, question number 2, then 3 and 4 is from your sound. We can plan for question number 4, 5, 6 is kinematics, 7th is kinematics, 7th one, 8th one we can plan ray optics. Then question number 13 we can do. Then question number 15 we can do. Question number, then again nuclear physics we can do. This atoms question we can do. Then again question number 25 we can try. Question number 26 we need to do pakka. 27 also we need to do pakka. 28 भी compulsory करना है. 29 भी compulsory करना है. 30 भी compulsory करना है. Fluid 30 fluid statics हम लोग बाद में देख लेते हैं. Viscosity भी बाद में देख लेते हैं. ये dual nature का compulsory करना है. Then उसके बाद these are the compulsory questions in 35. And section B में we'll be doing the questions right now. तो अपने लायक के कोई क्वेश्चन है क्या? बार मैग्नेटिज्म क्वेश्चन नंबर 42 हम लोग देख सकते हैं, मॉडर्न फिजिक्स का दिखाई दे रहा है. उसके बाद क्वेश्चन नंबर 46 ऑप्टिक्स का दिखाई दे रहा है. वी कैन डू दैट वन. क्वेश्चन नंबर 47 वी कैन डू, अगर फॉर्मूला याद हो तो. क्वेश्चन नंबर 50. तो दिस आर द क्वेश्चंस वी कैन डू. चलो देख लेते हैं पूरे कितने क्वेश्चंस कर रहे हैं बेटा पर. क्वेश्चन नंबर 1 2 जो राउंड अप करे वही करेंगे. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16. फर्स्ट के पेपर में सिर्फ 16 क्वेश्चन ही दिखाई दे रहे हैं. यानी 64-70 मार्क्स के लगभग का पेपर है बेटा. चलो क्वेश्चन नंबर 1 बताइए बेटा. टाइम नहीं है अपने पास, जल्दी जल्दी. If energy of the body moving along x-axis at a time t and the position x is been given by E is equals to a minus x square divided by bt, then the dimensions of a cross b will be equal to how much? I told you already बेटा, dimensions में subtract और add वही कर सकते हैं जिनके dimensions equal हो सकते हैं. यानी यहाँ पर dimension of your a must be equal to dimension of your b, यानी a must be equal to your x square. ठीक है ना? Is it clear? Energy is being representative. Energy of the body. E is your energy. Then dimensions of your B निकालना है. तो B की वैल्यू निकालो. B is equals to a minus of x square divided by this one is your E into your T. तो ये पूरा डायमेंशन किसके बराबर हो जाएगा बेटा? x स्क्वायर के बराबर हो जाएगा. डायमेंशन ऑफ एनर्जी इज नथिंग बट आई ऑलरेडी टोल्ड यू ml स्क्वायर t पावर -2 हो जाएगा और टाइम हो जाएगा t. तो यहाँ पर ये कितना बन जाएगा बेटा? x मतलब क्या हो जाएगा? l स्क्वायर चले जाएगा. m ऊपर जाएगा, m पावर -1 आ जाएगा एंड दिस वन इज t पावर 1 आ जाएगा. दिस इज द डायमेंशन ऑफ योर b, दिस इज द डायमेंशन ऑफ योर l, दैट इज नथिंग बट a स्क्वायर. तो अब a क्रॉस b विल बी इक्वल टू हाउ मच बेटा? ये हो गया l स्क्वायर इनटू m पावर -1 t पावर 1. तो आंसर हो जाएगा m पावर -1. m पावर -1 किस किस में है देखो? फर्स्ट ऑप्शन में, सेकंड और थर्ड ऑप्शन में है. तो सेकंड ऑप्शन और फोर्थ ऑप्शन तो नहीं होगा, तो 1 एंड 3 में आंसर होना चाहिए. m l स्क्वायर किसमें? इसमें है, तो थर्ड ऑप्शन में नहीं है, तो फर्स्ट ऑप्शन हो गया. ठीक है ना? चलो क्वेश्चन नंबर 2 देखिए बेटा. A particle is performing an SHM on x-axis with an amplitude a. Okay, a particle is performing an SHM on an x-axis
विद एन एम्पलीट्यूड ऑफ योर, यानी ये मीन पोजीशन हो गया, ये एक्सट्रीम पोजीशन हो गया। इसका एम्पलीट्यूड ये है t is equal to 0, the particle is starting from your rest, then time taken by to travel a distance of your a by 4 will be equal to your how much, isn't it? At t is equal to 0, the particle is starting from the rest, यानी यहाँ पर कहीं पर है, at t is equals to 0 at extreme position पे, then the time taken by to travel a distance of your a by 4, यानी यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना हो गया, a by 4, ठीक है। So you can be using the relation y is equals to your a into your cos of your theta, तो y की वैल्यू कितनी हो गई, a by 4, तो cos theta value will be equal to your y divided by your a, isn't it? तो डिस्प्लेसमेंट कितना है बेटा, मीन पोजीशन से लेके एक्सट्रीम पोजीशन तक का डिस्प्लेसमेंट, अगर ये a by 4 है तो ये बन जाएगा मुझे 3a डिवाइडेड बाई 4, यानी ये हो गया 3a डिवाइडेड बाई 4 डिवाइडेड बाई एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड इज ये गेट्स कैंसिल, सो इट इज 3 by 4, तो थीटा की वैल्यू हो गई मेरे पास cos इनवर्स ऑफ योर 3 by 4, सो टाइम टेकन विल बी इक्वल टू हाउ मच बेटा, थीटा इज इक्वल्स टू ओमेगा इनटू t लिख सकता हूं, दिस इज अ cos इनवर्स ऑफ योर 3 by 4, so time will be equal to how much, t is equals to your cos inverse of your 3 by 4 into your 1 by omega, omega कैसे लिख सकता हूँ मैं, omega is equals to 2 pi by capital T, तो ये बन जाएगा मेरे पास cos inverse of your this one is your 3 by 4 into omega is nothing but 2 pi, यानी ये हो जाएगा t divided by 2 pi, so t divided by 2 pi कहाँ पर है, t divided by 2 pi थर्ड ऑप्शन में है, और cos inverse 3 by 4 थर्ड ऑप्शन। Okay, question number 5 देख लीजिए बेटा जल्दी सर, question number 4, an athlete is running towards the stationary source, okay, source is your stationary source, velocity of source is equals to 0, an athlete यानी ये हो गया person who is running towards the stationary source with a speed of your how much, v by 5, that means this is the velocity of your observer, isn't it? That is v naught by 5, v is the speed of the sound, so speed of the sound is also in the same direction, source, ये source है ना बेटा, sorry, तो source अगर ये है तो sound is coming in which direction बेटा, opposite direction, तो sound आ रही है इस direction में और आप जा रहे हो opposite में, तो sign convention opposite हो जाएगा, the frequency and the wavelength observed by the athlete are equal to how much, frequency का फॉर्मूला n dash is equals to your n into your v minus of v naught divided by v minus of vs, सोर्स तो रेस्ट पे है तो ये 0 बन जाएगा, so it is your n into your velocity of sound minus ये हो गया minus of v naught divided by 5, v by 5 because velocity of observer is opposite to the velocity of your sound divided by v, तो ये हो गया मेरे पास n, इसकी वैल्यू हो गई कितनी, n into your this one is v plus of v divided by 5 divided by v, ठीक है, इज क्लियर, यहाँ पर v v कैंसिल हो जाएगा, 1 plus 1 by 5, so that will be equal to your 6 of this n divided by your 5, यानी 6 by 5 मतलब 5 ones of 5 यानी 1.2 f, that will be the frequency, so एथलीट की फ्रीक्वेंसी 1.2 f है, देन थर्ड ऑप्शन में देख लेते हैं 1.2 f है, 1.2 f है, तो वी कांट गेस द आंसर फॉर दिस वन, क्योंकि तीनों ऑप्शंस में है तो वी नीड टू इवन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ योर वेवलेंथ, देखो देयर विल बी नो चेंज इन द वेवलेंथ इन दिस केस, क्यों बोलो, जितनी वेवलेंथ से आ रही है उतनी ही वेवलेंथ रहेगी बेसिकली, द फ्रीक्वेंसी एंड द वेवलेंथ एज ऑब्जर्व्ड बाय द एथलीट बोल रहा है ना, क्योंकि this one is at rest, so there will be no change in the wavelength, so fourth one lambda 3 will be the answer, 1.2 lambda or lambda 1.2 f or lambda, why wavelength is not changing बेटा, क्योंकि source rest पे है ना, तो source is at rest and observer is moving towards it, तो observer का wavelength तो change नहीं होगा because he is just listening more sound whereas in the other condition, ठीक है, चलो then question number देख लेते हैं कौन सा करें, क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 देखिए बेटा, ग्रेविटेशन का क्वेश्चन है, कोई कर सकता है क्या, if the earth is supposed to be a sphere of radius r and g dash is the value of acceleration due to gravity at a latitude of 30 degrees and g is at the poles, then the value of g minus g dash will be equal to how much, याद है आप लोग
If G is supposed to be the sphere, if Earth is supposed to be a sphere, G dash is the value of acceleration due to gravity at a latitude of 30 degrees and G at your poles. Okay. G dash is the value of acceleration due to gravity at your latitude. कितना आएगा बेटा? किसी को आ रहा फॉर्मूला याद है? Very good. G minus of your G dash will be equal to your R into your cos square theta into your omega square. है कि नहीं? So that will be equal to your R. ये हो गया मेरे पास ओमेगा स्क्वायर इंटू योर आर इंटू योर कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी है 30 डिग्री सो दैट विल बी इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर इंटू आर कॉस स्क्वायर 30 विल बी इक्वल टू √3/2 का होल स्क्वायर यानी ये बन जाएगा मुझे 3 ओमेगा स्क्वायर इंटू आर डिवाइडेड बाय 4 सो 3/4 ओमेगा स्क्वायर इंटू आर सेकंड ऑप्शन विल बी द आंसर वेरी गुड क्वेश्चन नंबर 15 हीट इंजन का प्रॉब्लम है कोई ट्राई कर सकता है क्या देख लीजिए जल्दी से क्वेश्चन नंबर 15 two Carnot engine A and B have their sources at 1000 Kelvin and 1100 Kelvin and their sinks are at a temperature 400 Kelvin 500 Kelvin if neta A and neta B are their efficiency then what is the relation between them okay 15th one का देखिए बेटा efficiency of your A will be equal to 1 minus of your this one is of your temperature of your sink first one कितना दे रखा है 400 divided by इसका temperature कितना दे रखा है बेटा 1000 ठीक है efficiency of the B will be equal to 1 minus 500 divided by 100 so just simplify this one and see what option will be getting 15th one कितना आ रहा देखिए ये 2 zeros चले गए यहाँ पर 2 zeros चले गए so it is 1 minus 4/10 यानी 1 minus 0.4 ठीक है नहीं 1 minus of 0.4 यानी ये बन जाएगा 0.6 तो ये यहाँ से 2 0 ये 2 0 चले गए 1 minus 5/11 तो ये अप्रोक्सीमेटली आ जाएगा 0.545 so obviously efficiency of A is greater than efficiency of B फर्स्ट ऑप्शन आएगा ठीक है क्वेश्चन नंबर अभी कौन सा करें क्वेश्चन नंबर 20 नहीं ठीक है अपन पहले कर लेते हैं कंफर्टेबल स्कोर उसके बाद हम बढ़ते हैं बाकी के क्वेश्चंस के तरफ प्लीज 80 तक पहले कंफर्टेबल स्कोर कर ले विदाउट नेगेटिव जो आ रहे हैं उसको तो कर लें उसके बाद बाकी को निकलते हैं चलिए क्वेश्चन नंबर 22 बताइए द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ द न्यूट्रॉन इज 1.15 MeV per nucleon and alpha particle is 2He4 has a binding energy of 7.1 MeV per nucleon energy released in the following reaction मैंने आपको ऑलरेडी एनर्जी निकालने का तरीका बताया था एनर्जी रिक्वायर्ड विल बी इक्वल टू योर दिस वन इज राइट नाउ फॉर मी helium particle and this one is of your deuterium particle यानी this one is 4 into your इसका वैल्यू हो गया 7.1 minus this one is your 4 into your 1.15 isn't it so ये हो गया into mu ठीक है तो कितना आ रहा देख लीजिए that will give me the answer 4 into 7.1 can anyone give me the answer ठीक कितना हो जाएगा 28.4 minus this will be equal to how much for me 4 into 1.15 approximately 4.6 ठीक है ना so 28.4 ये हो गया minus 4.6 कितना आ रहा है बेटा 24 में से 4 निकालो 5 23.8 something 23.8 clear है third option question number 24 question number 24 a doubly ionized lithium atom is excited from its ground state n is equals to 1 to n is equals to 3 the wavelength of the spectral lines for corresponding transitions are lambda 32 31 321 then the value of 32 by lambda 31 21 by lambda 31 are respectively how much ये आप लोगों को फॉर्मूला याद होगा
1 by your lambda is proportional to your Rydberg's constant R into your 1 by your n1 square minus 1 by your n2 square in terms of lambda. अगर मैं wavelength लिख रहा हूँ पहले from 3 to 2, that means that will be proportional to your how much for me बेटा 3 to 2 में जा रहे हैं basically, तो it will be equal to 5R divided by 36. उसी तरह से लैम्बडा ऑफ योर 3 2 यानी इसका उल्टा बन जाएगा, दैट विल बी प्रोपोर्शनल टू योर 36 डिवाइडेड बाय 5R. ठीक है, उसी तरह से वेवलेंथ ऑफ योर 3 to your 1, isn't it? उसी तरह से वेवलेंथ ऑफ योर 2 to your 1, देखिए कितना आ रहा है. 3 to 1 will be proportional to your 9 by 8R and 2 to 1 will be your proportional to your 4 by your 3R. ठीक है, और पूछा क्या प्रॉब्लम ने 3 2 by 3 1 यानी 3 2 by your 3 1 यहाँ कर रहा हूँ. देखिए लैम्बडा ऑफ योर 3 2 डिवाइडेड बाय वेवलेंथ ऑफ योर 3 1, तो कितना आ रहा है देखिए 3 2 इज हाउ मच फॉर मी बेटा 36 डिवाइडेड बाय 5R इनटू दिस वन इज योर 8R डिवाइडेड बाय 9. AR चले गया, सो दिस सिंप्लीफाई कर लीजिए, सी हाउ मच आई एम गेटिंग द आंसर फॉर दिस. थोड़ा कैलकुलेशन बेस है, can still do it out. roughly देख लीजिए कितना हो रहा है. ये आर चले गया. Can anyone tell me the answer बेटा? ठीक है, हाँ 23 भी इजी है बेटा, कर ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं. वी कैन इवन डू क्वेश्चन नंबर 23 आल्सो. 23 भी कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं आराम से. इसका तो आंसर बोलिए पहले कितना आ रहा है. 36 into your 8, कोई बोलेगा आंसर? कितना आ रहा है? 36 into your 8 is 288 divided by 5 into 9, 5 9s are 45. Okay, so ये कितना हो गया 288 divided by 45, अप्रोक्सीमेटली बताइए 6 में जाएगा ना, 6.5 समथिंग, सॉरी 6.4 समथिंग आ जाएगा. 6.4 है क्या, देख लीजिए कहीं पर. ओके 6.4 है. वी नीड टू डू इवन द सेकंड वन आल्सो. 6.4 तो दो ऑप्शन में है ना बेटा, नहीं एक्सपेक्ट कर सकते. वी नीड टू इवन गो फॉर द वेवलेंथ ऑफ 2 by 1 डिवाइडेड बाय वेवलेंथ ऑफ 3. ये तो कैलकुलेटिंग क्वेश्चंस हो गए बेसिकली. 2 to 1 विल बी इक्वल टू 4 by 3R हो गया, ये उसका उल्टा हो जाएगा 3 1. 3 1 मतलब कहाँ पर ये वाला, तो ये हो गया 8R डिवाइडेड बाय 9. AR will get cancelled right now for, isn't it? इसकी वैल्यू कितनी आ रही है बेटा 4 8s are, this one is 32, this will be equal to your 3 9s are 7. So 32 divided by 27 कितना आ रहा है देखिए बेटा approximately, कोई बोलेगा 1.2. okay, I'll take this one as 1.2 यानी थर्ड ऑप्शन. ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 23 कर लीजिए. द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ योर रोटेटिंग बॉडी इज, ओमेगा वैल्यू दे रखा है मेरे पास. वेलोसिटी ऑफ ए पॉइंट ऑन ए बॉडी हैविंग ए पोजीशन वेक्टर r दे रखा है. सो वेलोसिटी ऑफ ए पॉइंट भी दे रखा है, तो ही इज आस्किंग एंगुलर. सो v इज इक्वल्स टू योर r ओमेगा, फॉर्मूला याद है आप लोगों को, वेक्टर्स में लिख रहे हैं तो v इज इक्वल्स टू योर ओमेगा बार क्रॉस ऑफ योर r बार. तो ओमेगा की वैल्यू कितनी है आई कैप माइनस ऑफ योर 2 जे कैप प्लस ऑफ योर 2 के कैप क्रॉस आर बार. आर बार की वैल्यू 4 जे कैप है माइनस ऑफ 3 के कैप. यू नीड टू टेक केयर हियर, यहाँ पर आई की वैल्यू 0 है बेटा, कुछ भी नहीं है यहाँ पर. तो कितना आएगा देखिए, एनीवन, आई विल बी इक्वल टू योर हाउ मच फॉर मी, दिस वन इज आई कैप माइनस ऑफ दिस वन. तो यहाँ पर आई कैप की वैल्यू कितनी हो गई 0. This is 4 I cap minus of your 3 K cap. कितना आ रहा है देखिए बेटा, कोई बताएगा? Anyone? Omega bar cross
Anyone? First option आ रहा है, ठीक है. I'm not doing. You can do the calculation on your own. चलो, question number 25 try करिए बेटा भाई. After learning the SHM, Guddu, a curious student of the 11th class, designed a spring pendulum with identical springs of the spring constant decay and a small block of mass m as shown in figure. When the block is at rest, it just touches the lower spring. So Guddu forgot to connect the lower spring with the block. The time period of the oscillation of the block when it is slightly pushed down and released will be equal to your how much? थोड़ा critical question है, will come back again because it will be time consuming. जो ऑप्शंस होते हैं पहले कर लेते हैं. 26 degrees. Equal mole of nitrogen and helium are being mixed. The ratio of the speed of sound in the mixture to that of your nitrogen will be equal to your how much? ये याद है किसी को? गामा ऑफ मिक्सचर कल ही कराया था, कल के फॉर्मूले में भी आया था डायरेक्टली. गामा ऑफ मिक्सचर विल बी इक्वल टू योर N1 into your molar specificated CP1 plus of your N2 into your CP2 divided by your N1 CV1 plus of your N2 CV2. Isn't it? So equal moles of एक तो nitrogen है और एक helium है. This one is helium and this one is of your nitrogen. Or the ratio of the speed of this sound in the mixture will be equal to your how much? So velocity of the sound का formula क्या है बेटा? V is equals to your under root of gamma into your R into T divided by your M. ये अपने को दो चैप्टर का कॉम्बिनेशन है बेटा, वेव्स का भी है और as well as of your kinetic हीट का भी कनेक्शन है बेसिकली. तो नाइट्रोजन के लिए अगर मैं बात कर रहा हूँ राइट नाउ, वेलोसिटी ऑफ योर नाइट्रोजन दैट इज इक्वल्स टू गामा ऑफ योर नाइट्रोजन डायटोमिक गैस, सो इट इज 7/5 into R divided by molecular weight is 28. ठीक है ना? Is it clear? Equal mole of nitrogen and helium are mixed. The ratio of the speed of sound in the mixture to that in nitrogen. तो नाइट्रोजन का इतना आ गया, अभी मिक्सचर का आना है. मिक्सचर का मतलब वेलोसिटी ऑफ मिक्सचर कैसा निकालोगे बेटा? वेलोसिटी ऑफ योर मिक्सचर विल बी इक्वल टू योर अंडर रूट ऑफ योर गामा ऑफ योर मिक्सचर लिखना पड़ेगा इनटू कैपिटल R इनटू T डिवाइडेड बाय योर मॉलिक्यूलर वेट ऑफ योर मिक्सचर. ठीक है, तो गामा ऑफ मिक्सचर यहाँ से निकल जाएगा अपने को. Isn't it? First one is right now for me number of moles N is equals to your mass by your molecular weight. Equal moles बोल रहा है बेसिकली. टाइम भी हो जाने आ रहा है बेटा, आप लोग ट्राई कर लीजिए, बाकी क्या हम ट्राई करें. ये तो फॉर्मूले में डाल दिस रेशियो निकाल लीजिए बेटा, दैट विल गिव मी द आंसर. आई एम लीविंग द कैलकुलेशन फॉर यू. Next one बेटा, a gas is being contained in a vessel of volume V0 at a pressure P0. If the gas is to be pumped out of a suction pump of a store volume V, then the number of moles of a gas remain in the vessel after 2 strokes is. ये भी हम लोग बाद में आ जाते हैं, लेंथी कैलकुलेशन हो जाएगा. क्वेश्चन नंबर 28. If P is the pressure, V is the volume, K is a Boltzmann's constant, T is the absolute temperature, then the quantity PV by KT will represent for me or how much? ये आंसर बोलना चाहिए, कोई बोल सकता है क्या? Number of molecules, third one directly लिखना. Very good. Question number 29. In the given figure, if delta U1 in delta U2 be the change in internal energies in the process of your A and B respectively, then what is the relation between them? So देखो बेटा cyclic process है, तो obviously internal energy कितनी होनी चाहिए? Obviously 0 होनी चाहिए. So internal energy 0 मतलब delta U1 plus delta U2 will be equal to 0. First option correct हो गया. Then उसके बाद क्या बोल रहा है? For the first law of thermodynamics, if I am applying the float, dq will be equal to du plus of your dw, isn't it? So du तो हो गया 0. So this is your work done and this is your delta q, dq, anything whatever it may be, isn't it? So heat is rejected by the system. यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या हो रहा है? 1 से 2 जा रहा है, फिर 2 से 1 आ रहा है, तो वॉल्यूम क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है. वॉल्यूम अगर डिक्रीज हो रहा है, दैट मींस हीट इज रिजेक्टेड टू द सिस्टम. So I can say here right now delta Q will be lesser than 0. Lesser than 0 मतलब heat is rejected to the system. Heat is rejected to the system. So net heat will be rejected by the system in the process of your A to your B. Clear है? Work done कितना हो जाएगा बेटा? Work done to go from your 1 to 2 is less, isn't it? Whereas this one is negative 2 to 1. Isn't it? Because pressure decrease हो रहा है बेटा. So total work done by the system is positive in the process A plus B बोला. नहीं, ये तो positive होगा, ये तो negative होगा, तो obviously ये नहीं होगा. So fourth option will be the answer.
क्वेश्चन नंबर 30 देख लीजिए बेटा. The temperature of your body falls from 52 to 44 in 4 minutes. Newton's laws of cooling. When placed in a surrounding of a constant temperature 18 degrees centigrade, the time taken for the temperature of the body to become 40 degrees is how much? देखिए आपको क्वेश्चन पेपर करने का सेटिंग, अब 1 घंटे में आपको क्वेश्चन पेपर पढ़ के करने में इतना टाइम यूज हो रहा है, isn't it? उसके लिए सिलेक्शन करे बिना अगर आप करते रहोगे ना तो टाइम बहुत ज्यादा वेस्ट हो जाएगा बेटा. तो इसका देखिए न्यूटन्स लॉस ऑफ कूलिंग के लिए डेल्टा थीटा डिवाइडेड बाय डेल्टा टी इज इक्वल्स टू थर्मल कंडक्टिविटी के इनटू ये हो गया मीन टेम्परेचर माइनस टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग. याद है फॉर्मूला? कहां से जा रहे हैं हम लोग? 52 से 44 यानी 52 माइनस 44 डिवाइडेड बाय यूर कितना टाइम है 4 मिनट्स में, दैट इज इक्वल्स टू के टेम्परेचर ऑफ ए सराउंडिंग यानी 52 प्लस 44 डिवाइडेड बाय 2. सराउंडिंग का टेम्परेचर कितना है बेटा? सराउंडिंग का टेम्परेचर है 18, तो ये हो जाएगा मेरे पास 48 माइनस ऑफ योर 8, इसमें तो इसमें से मुझे के की वैल्यू निकल जाएगी. के की वैल्यू निकाल के फिर आप क्या करें, द टाइम टेकन फॉर द टेम्परेचर टू बिकम 40 डिग्रीज, isn't it? यानी आप फिर 44 से लेके 40 तक जा रहे हो. तो सेकंड केस में जब आप लिखोगे फिर यहाँ पर I'll write with अनदर पेन, तो यहाँ पर लिखोगे आप 44 माइनस से 40 कितनी टाइम में जा रही है निकालना है अपने को. यहाँ पर हो गया के और यहाँ पर टेम्परेचर विल बी इक्वल टू हाउ मच बेटा? इसका एवरेज हो जाएगा 44 प्लस ऑफ योर 240 डिवाइडेड बाय 20, isn't it? That is your 84 divided by your 2. 84 divided by 2 मतलब 2 1 जा 2 4 जा 2 2 जा 42. ये हो जाएगा 42 माइनस ऑफ योर इसका टेम्परेचर कितना है सराउंडिंग टेम्परेचर तो 18. तो यहाँ से जो के वैल्यू आ रही है ना बट ये लिखा कि इस पे डाल दो एंड सिंप्लीफाई फॉर द टाइम, you'll get the answer for it. I'm leaving the calculation for you. You please try to do your calculation on your own. Then question number 32. 32 भी direct formula है. I hope everyone if you might have been remembered you can do. Otherwise तो करना मुश्किल है. Terminal velocity will be directly proportional to square of your amplitude, isn't it? And radius between capital R and small r का relation. Capital R is equals to your n to the power of 1/3 into small r. ये relation लेके कर लीजिए आराम से निकल जाता. Next one देखिए बेटा 33. The following graph shows the variation of the maximum kinetic energy of the photoelectrons emitted versus frequency. Okay, यहाँ पर maximum kinetic energy versus frequency straight line graph है. The stopping potential of the surface for the incident light of wavelength 4133.33 angstroms is nearly how much? Okay, stopping potential का formula अपन को अगर kinetic energy लिख रहे हैं E is equals to your work function plus of your kinetic energy, that is nothing but of your K max. इसका फॉर्मूला हो गया मेरे पास HSE by your lambda is equals to your work function plus of your kinetic energy. So I can write here maximum kinetic energy must be equal to your, this will be your HSE by your lambda minus work function, यानी this will be equal to H into your F minus of your work function. ऐसा हो जाएगा ना बेटा? तो उसमें से मैं वर्क फंक्शन की वैल्यू निकाल सकता हूँ, एनर्जी इंसिडेंट भी निकाल सकता हूँ. तो स्टॉपिंग पोटेंशियल ये कितना लिख सकते हैं? मैक्सिमम मतलब स्टॉपिंग पोटेंशियल E into Vs will be equal to H into F minus of your phi. So stopping potential will be equal to your H into your F divided by E minus of phi by your E. ठीक है ना? So इसको simplify कर लीजिए, that will give me the answer. Energy incident will be equal to how much? HC divided by lambda, यानी 12400 divided by 4133 approximately ले लीजिए, that will give me the value of energy. Work function will be equal to how much better? This is also your HC divided by your lambda, isn't it? तो इसके लिए फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी? C की वैल्यू और वेवलेंथ की वैल्यू, ये फ्रीक्वेंसी है ना बेटा. सो H into C by lambda, C by lambda मतलब H into न्यू की वैल्यू दे रखा है ना डायरेक्टली अपने को यहाँ पर. सो आई कैन राइट इट इज 6 into 10 to the power of 14. ये जरा देख लीजिए, that will give me the answer इसका वर्क फंक्शन. ठीक है, 36 नहीं है, वो भी नहीं है, कैलकुलेशन बेस्ड हो गया वो. Then question number 42. Can anyone question number 42 बेटा जल्दी से एक बार देख लीजिए कोई. An hydrogen like atom, 3 मिनट बचे. Hydrogen like atom of atomic number Z is in an excited state of quantum number 2n. It can emit a photon of a maximum wavelength 204 electron volt. If it makes a transition in a quantum number state n, a photon of energy 40.8 electron volt is emitted. The value of n will be equal to how much? See, when it is going from one state to another state, energy is been released. तो कहाँ से जा रही है? एनर्जी ऑफ योर 2n से एनर्जी ऑफ 1 को जा रही है. इसका एनर्जी कितना दे रखा है? 204 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. दिस इज माय फर्स्ट इक्वेशन, isn't it? एनर्जी पार्ट ऑफ रिलेशन क्लियर है?
if it makes a transition in the quantum state of your n, यानी it is going from your 2n to your some state of your n, तो जब दे रखा है 40.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, उसका ट्रांजिशन का फाइनल्स लिख लीजिए बेटा, इसको सिंपलीफाई कर लीजिए। तो ये जा रहा है फ्रॉम 2n ना, तो आई कैन राइट दैट एनर्जी एज ऑफ योर E1 divided by 2 into your n का whole square minus of your E1. This value is given as of your 204 electron volt. This is equation number 1. इसकी भी वैल्यू इतनी हो जाएगी, so it is your E तो रिलेशन 2n से लेके n तक जा रही है, so it is E1 divided by your 4 of your n का whole square. नहीं ये तो 2n स्क्वायर है ना, तो 4 का n स्क्वायर ही हो जाएगा, so 4 का स्क्वायर, यहाँ पर भी if तो होल स्क्वायर लिख दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं। माइनस ऑफ योर दिस इज योर E1 to your n square, that is equals to 40.8 electron volts, equation number 2. So solve 192 will get the answer. ठीक है, you just take care of your calculation, you get the value of your n for this. चलिए इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के पास। 37 करना है क्या? क्वेश्चन नंबर 37 क्या है? 37 डायरेक्ट क्वेश्चन है बेटा, अपन कर ले सकते हैं, करंट इलेक्ट्रिक स्टडी का ही क्वेश्चन है। केवीएल लगा लेना है, यहाँ से 10 जा रहा है, यहाँ पर कॉमन पोटेंशियल ले लो, यहाँ पर मान के चलो सम कॉमन पोटेंशियल V0 है, तो 10 माइनस ऑफ योर V0 डिवाइडेड बाय इसका रेजिस्टेंस, दैट इज नथिंग बट इक्वल टू 4 इज इक्वल्स टू, यहाँ से जा रहे हैं दैट मस्ट बी इक्वल टू योर दिस वन, दिस विल बी इक्वल टू योर, ये हो गया मेरे पास, फिर यहाँ से जा रहे हो, दिस विल बी योर V0 माइनस ऑफ योर 8 डिवाइडेड बाय 2 प्लस, फिर यहाँ से जा रहे हो तो दिस विल बी योर V0 माइनस 6 डिवाइडेड बाय 4, उसको सिंपलीफाई कर लो, दिस विल बी गेटिंग द वैल्यू ऑफ V0. वंस यू गेट द वैल्यू इज आस्किंग द करंट इन द 2 ohms branch, 2 ohms branch मतलब I is equals to V0 माइनस ऑफ योर 8 डिवाइडेड बाय 2, वो कर लो आंसर आ जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 46 को ट्राई कर सकता है क्या? 39 सेकंड से बचा हुआ है मेरे पास, अभी टाइम तो नहीं है, आप लोग एक बार कर लीजिए। Deviation का consider thin prism of angle 3 degrees and refractive index 1.5. Now horizontal incident ray of the prism, the plane mirror has been incident. Okay, deviation का formula tau is equals to your nu minus 1 into your angle of prism. Deviation of mirror का formula tau is equals to 180 minus of